जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत विश्वास और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में, इंट्राडे इनसाइट्स और निफ्टी 50। तो देखिए मतलब कल के सेशन में जो है हमने काफ़ी इंटेंस एक सेलिंग तो आते हुए देखा, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर से करेक्शन तो आएगा, मतलब राइट फ्रॉम 24,500 लेवल्स, बट करीब 700 पॉइंट का करेक्शन ऊपर से मतलब हमको जो है देखने को मिला, और वो भी बहुत ही ज़्यादा। सो नाउ द पॉइंट इज कि आज का जो ऑप्शन का डेटा है, देखिए एक तो जो है नीचे से हमने एक रिबाउंड आते हुए देखा, जो 23,830 का एक लेवल मैंने कहा था। सो दैट हैज इन प्रिंसिपल बीन रेस्पेक्टेड बाय द मार्केट। देयर वाज अ ब्रीच मोमेंटरीली, बट जो है उसमें वो थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए था। सो अब इन प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब आवरली ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, और जो आज का बाउंस है उसकी वजह से कहीं न कहीं जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि अ, कुछ कॉल राइटर्स जो है दे माइट हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड। सो द होल पॉइंट इज that after a very long time, I mean, I have been able to see this what do you call short unwinding on the call side. जो कॉल राइटर्स हैं, मतलब जो शॉर्ट बायस पोजीशंस हैं, सो दी कॉल सेलर्स somehow are forced to liquidate because if you can see, यहाँ पे देखिए आपका कॉल राइटिंग का जो नंबर है, ये आज जो चेंजेस हैं दिस इज नेगेटिव। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, द फिगर इज नॉट मच, अराउंड 60,000 टू अबाउट 1 लाख, दैट इज व्हाट हैज बीन द नंबर since morning. But the point remains that somehow I feel that the call writers are trapped, and they are kind of unwinding as well. So it is not that market has again bounced back by 500 points. No, it has not happened. But somehow they are feeling that probably there is a support, and if that unless that is breached, which could be possibly 23,800. So there is always a possibility of market bouncing back. So that is a fear in their mind. So that which is probably leading to this short unwinding. On the other side, put side, 5.5 lakh का number है, 5.5 lakh OI additions on the put side, which is not by like a huge margin by its standards, but of course it is worth noting, right? So now the point remains whether this fall is over or what is the scene. I mean, is it going to continue further, come back later on and make a new low? So we will have to look into the charts for that. So let's flip into the charts. Just a minute. Just a minute. So I think you are able to see the charts. This is the hourly chart for Nifty. So first things first, the end of day trend, that is important to note that despite the 700 point selling, the EOD trend remains up. जो डेली चार्ट पे हमारा जो ट्रेंड है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। 24,530 का हाई लगा है। ट्रेंड चेंज पॉइंट अभी भी हमारा 23,070 का जो पिछला लो था वही लगा हुआ है। आवरली ट्रेंड की अगर हम बात करें, मतलब विच इज व्हाट वाज द मतलब आई थिंक द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बेसिकली देखिए यहाँ पे हमको ये कहना पड़ेगा कि जो ब्रीच था 23,830 के नीचे, दैट वाज वेरी मार्जिनल, आई मीन फॉर मतलब इट डिड नॉट सस्टेन। सो इन प्रिंसिपल द ब्रीच वाज नेगेटेड, हम कह सकते हैं, बट हाउएवर व्हाट हैज दिस लेड टू अ redefined support. So now probably we have to recalibrate the support, and probably in my opinion it is better that we, instead of looking at a particular single number, rather we should be looking at a support band. So this support band happens to be between 23,820 and 23,780. So that is the support band that I'm working with. So this is where it is written, right? Now, along with this, there is also one more interesting thing on EOG end of day charts. If you pull up the daily charts, you will be able to see that there is a low at 22,183, followed by a low at 23,070. Now, if you would have connected these two lows, अगर इन दोनों लो का अगर हम कनेक्ट करें तो हमको जो है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है। सो आज की तारीख में या प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड दिस सपोर्ट इज काइंड ऑफ लाइकली to be at around just about 23,500. So this is again important to note, 23,500 rather than the number. Rather, we should be looking at the
ट्रेंड लाइन, द वन विच इज मार्क्ड इन द रेड कलर। तो ये रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इट इज अपवर्ड राइजिंग सो द नंबर्स विल चेंज, बट ये ट्रेंड लाइन को ईओडी के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि जो ट्रेंड चेंज पॉइंट है ईओडी बेसिस पे वो 23,070 है, काफी डीप है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन वायलेशन होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक और कुछ दूसरा टाइप का जो है एक शेप ले ले। अब देखिए, आप इसको जो है ना, मैं डेली चार्ट आपके सामने मैं एक बार लगा देता हूं। तो ये वही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सो अगर इसको आप नोट करेंगे, एक ही मिनट, एक बार के लिए जो है ना, ये मेरे ख्याल से हम प्रोफाइल को हटा सकते हैं यहाँ से। एक बार इस प्रोफाइल चार्ट को मैं हटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। प्रोफाइल चार्ट की जरूरत नहीं है अभी। तो देखिए, based on the current setup, you see this in between line, that is the blue line which is at around 23,800. These lines I'm changing the color into red. So we talked about this lower trend line just now. So this going forward will be important because apparently on EOD chart there seems to be a congestion which is in the shape of an ascending triangle. इन प्रिंसिपल ये हम इसको फ्लैट टॉप पकड़ सकते हैं। ऊपर के तरफ के जो दोनों हाई से वही 23,000 एक बार इसके पहले का है 24,600 वाला था द फर्स्ट टॉप, फॉलोड बाय द सेकंड टॉप व्हिच वाज मेड 2 days बैक एट 23,530। सो इन प्रिंसिपल वी कैन से दैट दिस इज अ ascending triangle which is emerging now. Whenever such triangles break, in case of a breakdown, तो उसके हिसाब से this can lead to further sell off towards I mean around 23,000 mark. That is what it apparently looks like as of now. वो हम बाद में देखेंगे। But वापस से let's go back to the hourly setup. एक मिनट। So now coming back to this hourly setup again, तो देखिए यहाँ पे ये हमको अब समझ में आ गया कि जो हमारा एंड ऑफ डे बेसिस पे जो ट्रेंड लाइन है रेड कलर वाला, ये एक्चुअली काफी क्रिटिकल है मेरी नजर में। तो क्योंकि 23,800 अगर टूटता है तो फिर ये सारे नंबर्स जो है इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। इमीडिएट बेसिस पे अभी अगर हम देखें तो इमीडिएट बेसिस पे हमारा सपोर्ट I think the level that are important on the higher side are 24,170। ये रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 24,170 और उसके ऊपर में 24,250। ये फिबोनाची के नंबर्स हैं फ्रॉम द इमीडिएट टॉप टू 23,800। अगर आप इसका उल्टा रिट्रेसमेंट जोड़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। नीचे में इंट्राडे बेसिस पे 23,900 आज का जो डे लो है उसको ही हम एक तरीके से सपोर्ट मान के चल सकते हैं, मतलब 23,900 आप पकड़ के चलिए। ऑप्शन का डेटा, क्योंकि देखिए इसमें कॉल अनवाइंडिंग है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट एक बार मतलब जो है, हो सकता है कि अगर ऑप्शन की डेटा में अगर नेगेटिविटी अगर बिल्डअप नहीं हो तो बाय द एंड ऑफ द डे एक और पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है। एक बार के लिए तो फटाक से 60-70 पॉइंट जो है मार्केट ने भाग गया था ना, मतलब व्हेन इट मेड द डे हाई, सो क्विकली इन 2-3 मिनट्स इट वेंट अप टू 24,134। अच्छी बात यह है कि अगर हम आवरली चार्ट के हिसाब से देखें, देखिए यहाँ पे जैसे इसके पहले अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने यहाँ पे 24,424 के लेवल पे जो सेल सिग्नल हमको जनरेट हुआ था बेस्ड ऑन द क्रॉसओवर, क्योंकि अब वहां पे हम ओवरबॉट से रेजिस्टेंस भी था, हम एक करेक्शन एक्चुअली एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अब उसका ट्रिगर पॉइंट हमने आरएसआई क्रॉसओवर से पकड़ लिया। Similarly, on the bottom side, now we are able to see a positive crossover today in the morning. तो अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब सिग्नल काम करे, बट ये एक है कि इसमें 23,800 का सपोर्ट है और आपको एक इंडिकेशन भी मिल रहा है कि प्रॉब्लम मार्केट इज ट्राइंग टू पुल अप द मोमेंटम। तो नेट नेट बॉटम लाइन हमारा यही रहेगा कि 23,800 या 780 का ही लेवल आप पकड़ लीजिए। ये गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सपोर्ट के हिसाब से हम अपने ट्रेड को डिवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक है ऑप्शन का डेटा, फिर जो इमीडिएट हमारा सपोर्ट है वो 23 आप 900 ही पकड़ के चलिए। अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही पकड़ना है तो 23,900 भी इवन पकड़ सकते हैं। 23,800 के नीचे ही सारी मंदी है, तो 23,800 के ऊपर दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग दिस थिंग, बाइंग सेटअप। और आरएसआई में क्रॉसओवर हमारा आ चुका है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए।
तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में कहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है 23,800 के स्टॉप लॉस के साथ में। इसको भले ही आप जो है इसको थोड़ा सा और आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप 770 कर दीजिए, क्योंकि 780 वो तो सपोर्ट बैंड ही है 820 और 780 के अंदर में, मतलब यहाँ से बार बार ये हो रहा है। अगर यहाँ पे अब मान लीजिए सस्टेन होता है, ये जरूरी है। देखिए ब्रेकडाउन में भले ही हम थोड़ा सा 20-50 पॉइंट नीचे अगर हम नेगेटिव हो तो ठीक है, बट हमको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट बेड, इट्स नॉट अ सिंगुलर नंबर, सो देयरफॉर we have to be very careful in terms of the violation. So if the violation happens, we probably need to sustain at least one complete 15-minute candle, and probably you should be able to see a breakdown on the mid caps as well, a weakness in the mid caps as well. जैसे फॉर एग्जांपल आज का ही अगर आप देखेंगे, द मिड कैप्स आर अबाउट 1.8% हाई compared to Nifty, which is about 0.7% high. So relatively, there is a strong activity happening in the broader market, in the mid-cap space, which is the reflection of the overall confidence level. So what should be the strategy? Strategy, needless to say, probably you know it already, what I'm indicating. Uh, any bullish strategy above 23,770, that works for me. Just in case, now the other thing, the negative part, breach below 23,770 in principle, which will mean support break. So in that case, what are the downside levels? So downside levels, possibly you can expect one number I have already mentioned, that is 23,500. That is one of the numbers. The other number is a Fibonacci number, which is again at 23,626. So if you notice, just give me a moment, I'll show you one more important thing. If we connected if we calculate the Fibonacci numbers between 23,070 and 24,530. So then these are, just a minute, let me change the settings. Dotted lines, I don't want dotted lines, I want straight lines. Oh, this is perfect. So if you see the numbers, where are the numbers? Font size. Okay, so let me increase the font size for once. Probably now you should be able to see the Fibonacci numbers. So if you see the Fibonacci numbers that are coming to your screen are 23,800. This particular levels, 23,800, which is a 50% mark, followed by the 61.8%, which is at 23,626. So the support at 23,800 is again, getting its kind of a support, or rather a justification from this Fibonacci number also. इसी वजह से यहाँ पे ये जो सपोर्ट है मेरे नजर में, ये 23,800 830 के बीच में, this number is, that's why important, because of 2-3 reasons. One, you have multiple bottoms, and then you also have a Fibonacci number. So coming back to the point again, on the downside, what are the possible levels? So one number is 23,500, but above that 23,600 is also we are able to see. Okay, that's again a number, and possibly a third number could be much deeper, which could be somewhere around 23,400 levels. So I'm just writing down these numbers. I mean, just in case if there is a breakdown, we should be knowing what are the numbers on the downside. So practically, if there is a short, look at this gap area also. Apart from the Fibonacci, I'm just deleting. Why 23,600 should be the first target? ये आपको ध्यान होगा. I'm marking this in orange color. This is the gap. So gap support, this is somewhere around 23,630 odd levels. So keep it 23,630. So anywhere between 23,630. So even if the range is not much, maybe 150 points immediately after the sell-off, that is what we can expect. And then maybe the markets could eventually look to test the lower support line somewhere around 23,000
500। अगर ये ब्रेक होता है, अगर 23,500 ब्रेक होता है, तो 400 के नंबर्स आप पकड़ के चलिए, बिल्कुल आने की संभावना है। बट उसका मतलब दिक्कत ये है कि इट कैन go down much further. It will probably not take a temporary pause at 23,400 if 23,500 or the red color trend line is broken. So then probably the whole structure of the daily chart being in uptrend is compromised. ठीक है? So net net अभी के लिए what is the take home takeaway for the day is basically 23,770 is the master level as of now. Bullish strategy is about 23,770. That is what I believe. Uh, Second, in case of a breakdown, then probably we are heading for much lower levels. The levels are mentioned here. So if you have any questions, let me just look at the screen on the early chart. It will turn bearish below 23,007. Vijay sir, the hourly chart will turn bearish below this support only, because any which way 23,830 was the last swing low, and since yesterday it violated just by a marginally for some time. Even the price move was not much, it was just about 20 points, and that too for 2-3 minutes. I think that was the breach. So in principle we can say broadly 23,830, or now that we know what is happening in the market. So yesterday I would say we survived luckily. That is what I will say, or my levels survived luckily. Now market has given me further information. It says that actually there is a support bid, so that is the reason I have drawn this support bid. So again markets can come down, and I won't be able to say if market will hold at what precise level. But all that I can say is maybe this 50-point band between 23,830 and 23,000 780, anywhere it could just hold up. So sorry, just a minute, screen is loading. So meanwhile the screen loads up. So what I was saying, I hope my voice is coming through. आवाज आ रही है? आवाज वीडियो? uh, okay, let me know if you are able to hear me. Upside resistance immediate basis पे 23,000, I mean sorry 24,170 180 से लेके 24,250 के रेंज में है. That is where the immediate resistance is, right? So I hope that answers your question. Okay, anything else? Breach 24,000. Is there any possibility to? I did not understand. I mean, Soham Patel ji, is there any possibility to breach 24,000? We are oscillating at around 24,000 only. मतलब intraday में if you're asking, then yes, nobody can say no. But for the day, the important level will be 23,900. This is where my intraday levels are. These are my intraday levels. Let me mark them with uh, blue color. So blue color is are my intraday numbers. On EOD basis, you can work with these numbers. Basically, this 23,770 is what we can work with. This is the EOD basis or hourly basis for a 1 or 2 day perspective. This is a support, followed by 23,500 support trend line. Yes, 24,000, 24,270 can be considered. Yes, it can be considered on the higher side. The day trend is still upside. Yes, yes. Market may consolidate here unless news flow. Yes, absolutely possible. And especially since tomorrow is Friday, so I mean it's very hard to say how market will react on a weekend. But nevertheless, we do not have to control things which are not in our control. Rather,
we can control only things which are in our hand, and that is 23,800 का support टूटे तो हमको पता होना चाहिए क्या करना है. We should know what are should be our plan if 23,800 breaks, or any number on the upside. Okay. Is there any well, nothing much. So thank you so much uh, for joining in, and I'll see you again tomorrow at 1 p.m. And hopefully the data remains positive, and by the end of the day, instead of breaking below 23,900, uh, we move up for one more time and possibly test around 24,200 levels at least. So thank you so much for joining in. कल मिलते हैं दोपहर के 1 बजे, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.